So welcoming once again to the second day of this today National Conference on MSME and Startups. With deepest gratitude, I welcome the chief guest for the second day, Mrs. Kavita Thakur ma'am, who is Zonal Head, Ahmedabad Central Bank of India. Big round of applause for ma'am. Accepted our invitation. Thank you, ma'am. And now I request Chairperson of the branch, CA Dr. Anjali Choksi, to please welcome ma'am with a memento. Not taking much time, I request Chairperson of the branch, CA Dr. Anjali Choksi, to please address the gathering. Please, ma'am. The esteemed chief guest for the second day of the conference, Kavita Thakur ma'am. We are really glad that she promised that I will not come on the first day due to prior commitments, but I will be sure on the second day. And ma'am, we are really grateful to you for sparing your valuable time with us. We once again welcome you. I'm sure the first day would have been a great learning lessons. And yes, the cultural evening was the perfect end to the first day. And believe me, today also we are going to have a great sessions today. The first session was fantastic. And we are again having sessions on legal awareness, how we can protect ourselves, our clients from the legal perspective. We are going to have an amazing panel discussion on SME IPO listing. The pre-IPO preparation, the market dynamics, the challenges once the IPO is announced. So we are going to have that amazing panel discussion and we are going to unwind the day with learnings from Bhagavad Gita. So I'm sure आज कुछ नई audience दिख रही है, कल वाली audience दिख नहीं रही है, but the show must go on and I once again welcome you and madam and with this wishing you again a great learning day today. Thank you. Thank you, Anjali ma'am, for your address. And it's time to hear to our chief guest, Honorable Chief Guest, Mrs. Kavita Thakur ma'am. I request you to please address us with your words of wisdom, ma'am. A very good morning to all of you. It's really my pleasure and pride to address such a vibrant, distinguished and elite class of professional bodies of our country. While coming on the way to this program, I was just thinking, what is the basic difference between a mainstream banker like me and you people? So what reply came to me, we as bankers are chefs of all and master of none. And you people are the perfect taskmaster and perfect master of your subject knowledge for which you are professional. I remember the days when I was AGM in an extra large branch of our bank, and that branch was under central statutory audit. So in that branch, every quarter, central statutory auditor used to come to audit my branch. तो अक्सर एक डिस्कशन हुआ करता था, तो वो बोलते थे कि मैडम जितना ब्रांच का एडवांस होता है ना, हम उसके हिसाब से सोच के आते हैं कि इतना एमओसी तो निकालना ही है यहाँ पे. तो मैं बोलती थी वी बोथ आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द चेयर. योर टारगेट इज़ टू डू मैक्सिमम एमओसी एंड माई टारगेट इज़ टू गेट माई ब्रांच ऑडिटेड विद नील एमओसी. सो सीए और बैंकर का रिलेशन जो है बड़ा क्लोज एज वेल एज ओपोजिशन दोनों साइड से रहता है. आई वॉज रियली एन्जॉइंग योर लास्ट मोमेंट डिस्कशन व्हेन आई एंटर्ड. देन मैम वॉज एड्रेसिंग यू, यू वर रेजिंग योर इश्यूज एंड ग्रीवेंसेस एंड दैट टाइम आई विल ऑल्सो गिव यू, because of course bankers have also so many issues with CAs as well as with the MSME borrowers also. And same is from your side also. We'll have a discussion for 5 to 10 minutes in the last of my presentation. So at first, I pay my heartiest gratitude to ICAI for according this special opportunity to me. For ICAI, I will say ICAI is the second largest professional body of chartered accountants of the world, with a strong tradition of service to the Indian economy in public interest. What prime role ICAI is playing is to help the government in policy formulation and its implementation. But three prime roles they are playing. One, ICAI offers inputs to different government bodies and regulatory bodies like RBI, SEBI,
CBDT, IRDA, regular suggestions and recommendations are invited from ICAI from time to time for any new policy formulation. Then, at country level, drafting of income tax laws, competition laws, company laws, ICAI play the main contributory role. Then, in compliance of corporate governance, ICAI is playing the prime role. ICAI also helps by adding values to all of you CA members by ensuring the professional ethics standards. Now, but the contribution of MSME to Indian economy, we all know around 63 million micro, small, and medium enterprises are offering employment to approximately 100 million of people. And MSME's growth is the main contributor to India's GDP. Roughly 30% of the contribution of GDP comes from the MSME sector only. After US, China, Germany, Japan, now India is the fifth largest, has become the fifth largest growing economy, and it has replaced UK. And now India is aspiring for the second position by the year 2025. MSME has the potential to push India towards the ambitious goal of 5 trillion economy. India is projected to have 50,000 startups by the end of 2024. Now we come to banks' contribution to MSME. In post-COVID period, you must have seen there have been various impediments to this sector growth, particularly because of lack of formal finance from the bank, modern technology, unavailability of skilled workforce, and limited access to the global markets. These constraints have been faced by the MSME sector, and they only can be overcome by the financial institutions, government bodies, with you people's help. Government has no doubt played a very pivotal role, and by providing post-COVID period, by providing GECL, credit guarantee line, to the MSME sector. And next, banks have also played a pivotal role in financial assistance through their various customized lending schemes using advanced technology for a seamless experience to all the MSME borrowers. Developments like e-commerce, blockchain, artificial intelligence, and robotic process automation have also given birth to digital business models and methodologies. India has the third largest fintech ecosystem globally. India is one of the fastest growing fintech market in the world. When we are shifting to digital financing model, the role of chartered accountants becomes very, very, very important. Owing to the massive reach and networks, banks can guide MSMEs through right collaboration, business protection, and knowledge sharing. Banks provide the financial assistance to the MSME sector, agriculture sector, retail sector, corporate sector, and other segments, which all are the main contributors to GDP. Now, the main crux, what challenges the banks are facing from the MSME borrowers basically. MSME promoters, we feel, as banks, we feel that they are ill-advised or lack of complete understanding of the financial and regulatory compliances. Promoters know their business very well, but they don't want to know the financial discipline. That problem banks are facing. They don't want to run behind the bank. They want everything without submission of adequate documents and papers. They want the finance should be sanctioned
within a day or two, which becomes difficult for the bankers. These are the challenges we are facing with the MSME sector. There is inadequate equity base leading to over leverage. Debt from informal money lenders in the market is not being reflected in the credit bureaus. Huge receivables from the private players as well as from the government departments are pending from long time. There is big cash flow mismatch leading to high NPAs in the banks. Inadequate collateral. All these factors create difficulty in ascertaining the actual leverage. Banks play a crucial role in mitigating risks and ensuring the financial stability of MSME sector. They offer risk mitigators such as credit guarantee schemes offered by Government of India to protect MSMEs against unexpected events. Additionally, banks also provide hedging solution to shield MSMEs from exchange rate fluctuations and interest rate risks. By this way, if MSME sector also cooperate banks, so they can flourish like anything. How chartered accountants can help the bank more for the seamless financing to this sector? Maintaining proper book of accounts of all the MSME borrowers. Pursue the promoter to go digital in transactions which the borrowers presently are not interested to. Help the promoter in maintaining proper collateral registry. Maintaining all the documents required for loan processing. We are experiencing even getting simple information from the borrower is very difficult. Business access to government schemes by all the CAs, grants, subsidies, and to get them updated to the MSME borrowers is very much essential. Spread the financial literacy and statutory compliances like filing of ITR, GST within time frame, use minimum physical transactions and paperless banking. To conclude, I will say, if we talk about implementation of financial policies and schemes of government, ICAI, and all the CA members and banks, they all are two sides of coins, adding value to each other and presence of each other inevitable. In nutshell, I will say, banks, all the chartered accountants, and government regulatory bodies are the ultimate contributors for MSME growth, resulting in enhanced value-added GDP to the country. Thank you. This was the academic part from my side, but I will enjoy more if we make this session healthier with personal discussion. If any questions come from your side, what problem you face with the banks, I will maybe able to reply you, and what problems we face from the MSME borrowers. Basically, what issue comes, as now I am heading Gujarat state, and you know Surat and Rajkot, these are the main MSME hubs. But the customers, but the MSME borrower, they are not financially literate persons. They are perfect in their business, okay? But they don't want to even understand the financial discipline. But bank's constraint is that they need all the documents properly to process the proposal. Regularly it happens with me कि कस्टमर अपना प्रपोजल देता है, 2 दिन बाद मुझे फ़ोन कर देता है, राजकोट से प्रपोजल आया, अभी पेपर्स उसने सफिशिएंट दिए नहीं है, मैडम मेरा लोन आपके ऑफिस में गया वो अभी तक हो नहीं रहा है. When we ask for the payments, sometimes he gets irritated, आपके बैंक में तो पेपर ही बहुत मांगते हैं. But whereas it happens in all the banks, it is the मतलब essential for us for processing of loan documents that you all will admit. बैंक की नौकरी ऐसी है, हम 100 लोन अच्छे कर लें, लेकिन एक लोन खराब हो जाता है ना, तो वहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है. So, to cooperate the banks, CAs plays the pivotal role, because in MSME, I feel most of the MSME borrowers are engaging the chartered accountants for consultancy services.
these problems we are basically facing from the MSME borrowers. They are not literate much. मैंने ऐसी branches में काम किया है जो ये सब वो समझना भी नहीं चाहते. वो कहते हैं हमें अपना कस्टमर अपना काम पता है. मुझे याद है एक ब्रांच में एक कस्टमर आते थे ना, तो वो एक नॉर्मल एप्लीकेशन भी ड्राफ्ट नहीं कर सकते. तो मैं अपने किसी स्टाफ को बुला के डिक्टेट करती थी, वो लिखता था और वो सिर्फ साइन करता था. एक बार एक पोल्ट्री फार्म का अकाउंट था और उसने वो पेन स्लिप पे लिख के जाता था हमेशा एसपी और अमाउंट भरा और जमा कर देता था. अब मेरा स्टाफ बोलता था मैडम एसपी का क्या मतलब हुआ, शर्मा पोल्ट्री फार्म भी वो नहीं लिख सकता कस्टमर. एंड इन करोड्स ही वाज हैविंग हिज लिमिट विद माय ब्रांच. ही वाज रनिंग हिज पोल्ट्री फार्म वेरी वेल. So these type of constraints we face, and when we ask for papers कि हमें ITR या audited balance sheet चाहिए, तो वो एकदम customer irritate होने लग जाते हैं. That should not happen. How it can be resolved, only you people can do it, because you are only consulting to your respective clients. ठीक है, you have to get them understand the value of financial discipline. Second, what main problem we are facing is the highest NPA in MSME sector. Practically, I may tell you, एक normal branch manager ना retail अच्छे से कर लेगा, agriculture कर लेगा, लेकिन MSME से बहुत डरता है, बहुत ज़्यादा. He always hesitant for sanctioning loan to MSME sector. What is the reason behind it? Because of high NPA in this sector. एंड मैं आपको अपना एक पास्ट एक्सपीरियंस बताऊं. जिस ब्रांच में मैं AGM थी, उसी ब्रांच में एक AGM ने बहुत हैवी फाइनेंसिंग MSME सेक्टर को कर दी और NPA बहुत ज़्यादा हो गई एंड ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द बैंक. ऐसा नहीं है कि वो काबिल नहीं था. सो दीज टाइप ऑफ इंस्टांसेस हैपन इन द बैंक. हर किसी को अपनी जॉब अपनी लाइफ प्यारी है, तो वेयर द बैंकर्स आर रॉन्ग. ठीक है ना. तो इसमें NPA के लिए भी आप लोग हमें मदद कर सकते हैं और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी मेंटेन करने के लिए वी रिक्वायर योर हेल्प ओनली. नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड आई विल. यस, फ्रॉम बैंक्स, एनीथिंग, एनी ग्रीवेंसेस यू आर हैविंग फ्रॉम बैंक्स दैट यू कैन रेज योर क्वेश्चंस. मैम, आप लोग इरिटेट होते हैं, हम लोग समझ सकते हैं, और क्लाइंट इरिटेट होता है आपकी बहुत सारी क्वेरीज से. पर उसके लिए एक रीज़न ये भी है कि जब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जब बैंक मांगता है फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट लिस्ट डजंट कवर दैट एडिशनल डॉक्यूमेंट विच bankers are asking in that second or third query. Just I will reply to it. Especially in case of MSME, in case of home loan, in case of any other loans. वो कोई इशू नहीं है. होम लोन तो मतलब इज द सिंपलेस्ट लोन, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. एक नॉर्मल चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वो लिया और कर दिया. बट MSME इज द मेन ना. MSME में क्या दिक्कत आती है, हमने आपको एक चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे दिया, आपने और बैलेंस शीट दी, उसके सारे फाइनेंशियल्स दिए. देयर आर सो मैनी क्वेरीज विच आर रेज्ड आफ्टर सबमिशन ऑफ योर पेपर्स. then only we will raise those queries ना. so you can't say कि बैंक उसके बाद कम से कम 3 या 4 बार queries raise नहीं करेगा. वो कई डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कई queries जो हैं, वो आपके पेपर से ही निकल कर आती हैं. सो वी कांट से कि वन टाइम, किसी भी बैंक में मुझे अपना एक्सपीरियंस बता दो जहाँ आप वन टाइम पेपर दो विदाउट रेजिंग एनी क्वेरी और वो आपको लोन सैंक्शन कर दें. अगर ऐसा भी हो जाता है ना, तो वेरी फर्स्ट एलिगेशन इज पुट ऑन द बैंकर कि आपने क्वालिटी प्रोसेसिंग नहीं किया उसका. बट इट इज जस्ट मतलब अगर ब्रांच में फाइल होती है, ओनली यू पीपल एंड योर क्लाइंट हैव टू कोऑपरेट. ये रीजन बता रहा हूँ कि क्यों क्लाइंट इरिटेट हो रहे हैं. इरिटेट होता है. यस, यही मेरा भी यही पर्पज़ है आपको बताने का. जब भी क्लाइंट आपके पास आता है ना, सबसे पहले आपने उसको वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बतानी है. सबसे पहले उसको NPA के ऊपर सारा बताना है. अभी क्या होता है ना, बैंक में अकाउंट NPA होता है, उससे पहले कस्टमर को OTS स्कीम के बारे में पता चल जाता है. वो वेट करता रहता है कि अभी मैं इस दिन के बाद OTS स्कीम के लिए एलिजिबल होऊंगा, तभी मैं इसको इस अकाउंट को ख़त्म करूँगा. दिस प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. और होता क्या है, वो कंसर्न जो भी ब्रांच मैनेजर, जो भी फंक्शनरी था, वो उसका कैरियर प्रॉब्लम में आ जाता है. सच में मैं बताती हूँ, ये दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ 32 ईयर्स बैंकिंग इज सेइंग. सिर्फ इस वजह से हम लोग बैंक की नौकरी आज कोई करना नहीं चाहता.
कोई प्रोफेशनल बैंक में रहना नहीं चाहता बिकॉज दीज प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग फ्रॉम एनपीए बोरोवर्स। और मैं तो अभी इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये सब बताना चाहूँगी, ICAI भी इसमें, मैं तो बोलती हूँ कि बचपन से ही बच्चों की स्कूल की एजुकेशन में ही स्पिरिचुअल एजुकेशन शुड बी द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। बच्चे को ये समझ आनी चाहिए कि अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगा तो मेरे साथ भी आगे गलत होने वाला है। कर्मा थ्योरी यू ऑल नो वेरी वेल, है कि नहीं? भगवत गीता अभी मैडम बता रही थी, उस पर भी आपका कोई सेशन रखा है, तो क्यों ना वो सेशन आप अपने कस्टमर्स को भी बताएं। जिस दिन ऐसा होने लग जाएगा एनपीए नहीं होगा। अभी पहले से अभी काफ़ी चेक्स आ गए हैं, ठीक है ना। पहले तो CIC स्कोर भी उतना परफेक्टली काम नहीं करता था। आई रिमेंबर द डेज कि एक कस्टमर, उसका अकाउंट मेरे पास IREC में DA2 कैटेगरी में अकाउंट होता था और उसका CIC स्कोर 800 प्लस आ रहा था। तो मैंने CIC इनके सिविल टीम के साथ टेकअप किया और उसको ठीक करवाया। कुछ चेक्स आ गए हैं बट अभी वी नीड टू गो फॉरवर्ड। मैम हम लोग MSME के लिए सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं ना कि ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर में जब हम सारा डाटा डालेंगे वो ही बता देगा। जब ये PSB 59 आया, PSB 59 इज़ द बेटर वे ऑफ प्रोसेसिंग एंड टेकिंग डिसीजन बाय द बैंकर्स, क्योंकि वो सब चीज़ जरा सी भी कहीं पे भी बोरोवर इज फेलिंग वो रिजेक्ट कर देता था लोन। हमारे लिए आसान हो गया। यस एक्सपेक्ट सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जो जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ब्रांच में, वो ब्रांच के लोग MSME के फाइनेंस को एड्रेस करने के लिए इतने एजुकेटेड नहीं रहते कि वो पहले यस बोलते हैं और फिर बाद में जब ROZO में जब फाइल पहुंचती है वहां से रिजेक्ट होकर आती है। वो प्रॉब्लम है मैम। क्योंकि ROZO में थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा लोग हाँ, बैठे पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्रंट रो में वो लोग फ्रंट रो में तो सारे वो डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस ऑफ द ब्रांच, उसके हिसाब से ही स्टाफ बिठाया जाता है। बड़ी ब्रांचेज में CS दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ जितना जो अब आप स्केल 2, 3, 4 की ब्रांचेज में जाएंगे तो उसका MSME पोर्टफोलियो मैक्सिमम 50 करोड़ तक होगा, तो उसके लिए एक CA नहीं बिठा सकते हैं वहाँ पे। वो दैट आई नो। मेरा वेरी फर्स्ट सेंटेंस आपने सुना होगा, मैंने बोला था ना, वी आर शेफ्स ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, यू आर मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट। ठीक है, वो दैट इज़ देयर, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ द सिस्टम। मैं समझती हूँ अगर आप थोड़ा सा कस्टमर्स को, हम थोड़ा डिजिटल बैंकिंग में जाएंगे ना अभी, तो इट विल बी बेटर फॉर अस। अभी भी हमें पहले से बहुत अच्छा क्वालिटी लेंडिंग होने लगी है पहले से। रीज़न कि अब वो चेक्स, इफ्स एंड बट्स जो हम पहले मैनुअली चेक करते थे वो सिस्टम करने लगा है, तो वो दैट इज़ द एक्यूरेट एंड जेन्युइन फाइनेंसिंग कैन हैपन विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज एनेबलर्स। Yes, anything else? Thank you, ma'am. First of all, I would like to thank you, Anjali ma'am, for this initiative. I mean, we have seen 3 ladies in the morning. Anjali ma'am, you as an head of the entire state and also ministry, madam here. So, ma'am, I just want to tell that I completely agree what you say. I was part of Union Bank head office. I am from Mumbai. Work more than 3.5 years there. And including what you told, that fear and leaving the job, so I have experienced, and recently also yesterday I experienced here also. I met here one participant who has also left the bank. So obviously there are so many difficulties in bank. Yes. But as in now the awareness, and the institute is also doing awareness. So with that now what our people also doing from last 75 years as a chartered accountant, to have a everyone is telling, every chartered accountant telling to client like to pay the income tax, to pay the GST, or to do the compliance. But now everyone is doing MSME to have a like what benefit take from the government or the banker. Like Yes. ma'am is also told the CGTMS scheme, and you also repeated the same. Yes. And many financial scheme. So we all assure that have a quality account and a quality check, that you should also not suffer as an NPA, and we should also have a check. Yes, that, yes. yeah. Very Thank good, you, ma'am. very good question you have raised, and I appreciate कि bankers आजकल बैंक की जॉब क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, because of all these problems. Even if I am in the bank having 32 years experience, मैं practically, बिल्कुल practically बात बताऊँ, मेरी twin daughters हैं, I never wanted them to be banker.
इसीलिए बिकॉज ये सब चीज़ें हमने फेस की हैं और उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, आप और हम लोग मिलकर कर सकते हैं. अभी मैडम ने एक बड़ा अच्छा, एक मैडम बोल रही थी, यू स्पोक शायद, फॉर क्रिएशन ऑफ ए बेटर फ्यूचर वी हैव टू बी द क्रिएटर्स फर्स्ट. सो आप और हम मिल के एक बेटर फ्यूचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सबसे पहला काम जो है अपने बोरोवर को फाइनेंशियली प्रॉपर गाइड करना है. उसको OTS की स्कीम्स नहीं समझानी, उसको समझाना है भाई मेरे पास अगर तूने आना है, मेरे थ्रू लोन करवाना है तो लोन टाइम पे रीपे होना चाहिए. उससे आपकी भी मार्केट क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है. अब हमारे पास 10 CA आते हैं, 2-3 CAs ऐसे होते हैं जो हमें पता है कि इसका करवाया हुआ लोन कभी खराब नहीं होता, तो उसके एक बार कहते ही अगर उसने बोल दिया ना कि मैडम ये लोन कर दो, तो हम एकदम से करते हैं. कुछ CAs के ऐसे इमेज इस तरह की बन जाती है कि इसलिए जो भी करवाएगा अल्टीमेटली NPA ही होना है. वो भले ही लोन बहुत अच्छा भी ले आए, कहते हैं ना बद अच्छा बदनाम बुरा, तो वो कोई अच्छा भी लोन ले आएगा ना तब भी हम उसको शक की नज़रों से देखेंगे, नहीं नहीं ये बंदा लाया है तो इट मीन्स नो. So that image is very much important to be created before the bankers by you people. That is my request to you. Anything else? Madam, I can say I congratulate a branch entirely, because I am coming from Baroda where we don't have such kind of forum to discuss such people. So thank you for the branch. And madam, I wanted to ask a question that whenever the client comes where there is a CIBIL is an issue, so why don't even the government official, and there are many representatives, why can't we have that CIBIL has got some of the information which is not complete in an entire manner? So if we find that there is a loophole for, let us say, overdue for some amount, where a person would not be knowing that where the loopholes is there, or which bank's credit card is there, is there any mechanism or your input into that, that if we can solve this so that we can improve such people to go for MSME and then the loan? Yes, CIC is improving with passage of time. मैंने आपको बोला ना, एक टाइम वो था जब DA2 का अकाउंट था तब भी अकाउंट का उसका 800 आता था. अब काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आ गए हैं विद पैसेज ऑफ टाइम. इट विल हैपन ऑल्सो कि अब जैसे क्रेडिट कार्ड का अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है. मैं अपने इशू बताती हूँ. मेरे हस्बैंड एक दिन मूवी का टिकट SBI, वो उनके पास कार्ड था तो उसमें फ्री मिलता है, उसमें कोई 1.5 रुपये का टैक्स का लगा हुआ था. दैट ही डिडेंट केयर. उसने हस्बैंड का ध्यान नहीं, अननोइंगली वो हो गया, और सिबिल का स्कोर जो है वो 100 स्कोर डाउन आ गया उससे. Then I told him कि आप इसको ठीक करवाओ और आगे से इसका ध्यान रखना. तो इट इज़ ए वेरी माइनर इशू. अब इतने से इशू की वजह से अगर बैंक में किसी का लोन रिजेक्ट हो जाए, वेयर एज ही इज़ नो वेयर एट फॉल्ट, ठीक है, तो वो हम भी देखते हैं. अगर ऐसा कोई टेक्निकल इशू, जब हम प्रपोजल को प्रोसेस करते हैं उसमें कुछ डिस्क्रेशंस भी दी होती हैं. रीजनल हेड लेवल पे भी कुछ हैं, देन मेरे लेवल पे, many a time madam it happens that into the front end people would be rejecting by the score. They would not go into integrities of what is the. We go into the details. वो तो ये होता है ना, अगर किसी ने मान लो कोई लोन करना ही नहीं है तो उसको देखते ही सबसे पहला एक्सक्यूज मिल गया कि CIC स्कोर ही कम है तो मैं क्यों करूँ, वो अलग चीज़ है. बट जनरली वी गो थ्रू इट. इफ इट इज a technical error, we take care of it. Normal way, or the bank is having some kind of person whom we can also discuss, because we are basically, even if we need to start a grievance with CIBIL, it has to be with that person. Yes, yes. And many times it is a case they would not be operating in a right manner. They would not be using the email ID. Those constraints you must be facing, but in generally I feel in all the banks, in case of credit card or technical issues, they take care of these aspects. But if it is because of default the CIBIL has been lower, then even I am having no power. I am having even no we don't want to promote such people. सबसे पहला काम तो ये ना, हम अपने कस्टमर को गाइड करें कि कभी भी लोन एट डिफ़ॉल्ट नहीं जाना चाहिए. SMA 0, SMA 1, SMA 2 का कॉन्सेप्ट आया है ना, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, वो जिस दिन हमने अपने कस्टमर को समझा दिया. अच्छे कस्टमर भी बहुत है मार्केट में, बैंकिंग तभी चल रही है, बैंक्स सारे प्रॉफिट में हैं तभी चल रही है ना. बट कुछ एक कस्टमर्स ने ऐसा सिस्टम को स्पॉइल कर दिया कि जिससे एक अच्छा कस्टमर भी जब MSME का लोन लेने ब्रांच में जाता है तो वो ब्रांच मैनेजर ने अपना माइंड सेट वैसे डेवलप कर लिया, नहीं MSME है तो मीन्स NPA होगा. इन जनरल मैं बता रही हूँ, नॉट फॉर ऑल, मतलब इन जनरल हु आर हैविंग एवरेज नॉलेज बेस,
जो अच्छी नॉलेज है तो वो तो प्रपोजल को असेस कर लेगा, बट इन जनरल आप ब्रांचेज में फील करते होंगे कि ब्रांच में जाओ तो वो MSME देख के सीधा ही मना करते. वाई इट इज़ हैपनिंग, दैट आस्पेक्ट वी गो डीप इनटू दैट. ठीक है ना. Actually 5,000 का overdue रहता है, he would not be knowing that from where it is there. He is ready to pay entirely, हाँ. but still it is कि वो not there. 5,000 किस वजह से आया. And from which bank it is there? हाँ, yourself, यही मेरा next reply. Yes, I am getting it, but still it is entire detail is not If being. bank is login from their system, it will come from other institution. They will not reflect it the name of the Yes. institution. But if you log in from your personal, then it will be shown. Thank you. Anything else? Thank you so much. I have really enjoyed the session with all of you. And I am also all time available. We also need good proposals, and almost all the banks are now having DSA policy. So in which good commission is being offered to all the DSAs. For that also you can apply in our bank. You are always welcome. My office is in Lal Darwaja, Ahmedabad. So anytime you all are welcome to my office. Thank you so much. Thank you so much, Kavita ma'am, for being so humble and generous to us. Actually, she was unwell today in the morning. She communicated me, but I requested her to not skip this event. And thank you, ma'am, once again for your kind presence. And your words of wisdom were really motivating us. Although I think you showed us the path, the lightning of ICAI, how we are working as a partners in nation building, and how we can help MSME to grow in a healthier manner, I should say, so that they perform well, they get a proper guidance from us, so they don't de-benefit the bank and perform well in their business as well. So thank you, ma'am, for your address. Thank you to all the dignitaries who have joined us in this inaugural session. And ma'am, we would like to hear you more and more again at ICAI platforms. So thank you so much, ma'am, for joining in the inaugural session and being chief guest for the second day of this national conference. Thank you so much.